Hello everyone and welcome back to my channel. So today I am going to tell you the very beautiful poem which is Fire and Ice, which is written by the Robert Frost. So Fire and Ice is a symbolic poem which means there are two meanings of fire and ice. यानी कि ये एक fire and ice जो है वो दो meaning से denote किया गया है. The fire meaning is greed लालच, okay, and the ice is denoted to hate, coldness and rigidity. ice यहाँ पे denote किया गया है hate से. So what happens in the poem? The poet refers to the two prediction of how the world will end. So यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो इसके राइटर हैं, उन्होंने दो अनुमान लगाए हैं कि हमारी दुनिया कैसे ख़त्म होगी. So let's start. Some say the world will end in fire and some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर टेम्परेचर के बढ़ने से ख़त्म होगी. कुछ लोग कहते हैं नहीं टेम्परेचर के बढ़ने से नहीं, टेम्परेचर के घटने से ख़त्म होगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन जब मैंने लोगों की डिज़ायर यानी विश, जब मैंने लोगों के डिज़ायर को देखा, उन्हें एक्सपीरियंस करा, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो लोग कहते हैं कि हमारी धरती या फिर हमारा जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा. I will support to them who say the world will end in fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. But अगर ये दुनिया दो बार ख़त्म होगी, यानी एक बार ख़त्म हुई फिर दूसरी बार ख़त्म हुई, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट यानी ह्यूमैनिटी होगी भी नहीं, तो फिर एक सफिशेंट हो जाएगा कि हाँ, मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जो कहते हैं कि आइस की वजह से वर्ल्ड विल एंड इन फाइस. So what is Robert Frost is saying? One become insensitive and indifferent toward the feeling of others. The poet says both fire and ice are growing with such a rapid speed the world will soon perish other way in fire and ice. यानी जो फायर एंड आइस यानी हेट और ह्यूमैनिटी इतनी कम हो रही है, ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में कि सून यानी जल्दी हमारी धरती ख़त्म हो जाएगी. That's why the fire and ice are growing with such a rapid speed. The one of the most remembered thing, if the question is saying what is fire denoted in the poem, fire and ice which is denoted in the poem. So fire is denoted to the word greed, desire, avarice or lust, and the word ice is denoted to rigidity, hatred and coldness. Hope you understand this video. Thank you.